Jai Gopi Jana Vallabha Girivaradhari. Jai Gopi Jana Vallabha Girivaradhari. Yashodanandana Brajajana Ranjana. Yashodanandana Brajajana Ranjana. Yamuna Tira Manachari. Yamuna Tira Manachari. Jaya Radha Madhava Kunja Vihari. Jai Gopi Jana Vallabha Girivaradhari. Jai Gopi Jana Vallabha Girivaradhari. Yashodanandana Brajajana Ranjana. Yashodanandana Brajajana Ranjana. Yashodanandana Brajajana Ranjana. Yamuna Tira Vanachari. Yamuna Tira Vanachari. Jaya Radha Madhava Kunja Vihari. Jai Gopi Jana Vallabha Girivaradhari. Yashodanandana Brajajana Ranjana. Yashodanandana Brajajana Ranjana. Yamuna Tira Vanachari. Yamuna Tira Vanachari. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare
Haribo, Haribo. Haribo. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Everybody loudly. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Radha Madan Mohan Radha Madan Mohan Radha. Jaya Radhe 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 Jaya Jati Radhe 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 Jaya Jati Radhe. Jaya Radha Madan Mohan Radha Madan Mohan Radhe. Jai Gauranita, 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 Jai Gauranita. Jai Gaura Hare, Jai Gaura Hare, Gaura 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 Hare. Jai Prabhupada, 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 Jai Prabhupada.
Prabhupada, 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 Gurudev. Jai Vishwapad Paramahansa Pravacharya Stotar Sat His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai. Everybody Founder Acharya His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai. Namacharya Haridas Thakur Ki Jai. Prem se kaho Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advait Gadadhar Shivas Adi Gaur Bhaktivinoda Ki Jai. Shri Radha Krishna Gopinath Radha Kunjham Kun Giri Govardhana Ki Jai. वृंदावन धाम की जय, मथुरा धाम की जय, द्वारका धाम की जय, रामेश्वर बद्रीनाथ धाम की जय, जगन्नाथपुरी धाम की जय, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की जय, मायापुर नवदीप धाम की जय, गंगा माई जमुना माई की जय, मुंदे तुलसी महारानी की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्री श्री राधा मदन मोहन जी की जय, श्री निताय गौर सुंदर भगवान की जय, Srila Prabhupada Transcendental Book Distribution ki jai, Srila Prabhupada Guru Puja ki jai, Srila Prabhupada Transcendental Prasad Vitran Program ki jai, Harinama Sankirtan ki jai, Gaur Premanande. All glories assembled devotees, all glories assembled devotees, all glories, all glories, all glories, Shri Guru and Gauranga. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. So we are reading from Srimad Bhagavatam, canto number 7, chapter number 1, and the verse is 43. So I'd like to welcome all the devotees here in the morning. You're all very fortunate to come. Your mind, your senses, your body is allowing you to come to this temple, especially in the morning to study Srimad Bhagavatam. It's very good. It's very nice. And of course, those are devotees, those who are chanting 16 malas. They have taken up the process of Krishna consciousness and surrendered to the spiritual master. It is their compulsory endeavor which they should push so that they can avail these wonderful facilities coming from the Lord's pure devotee, and we must aspire to be there all the time because you are all initiated devotees. Initiation means connecting yourself with Krishna through parampara, connecting yourself with Krishna with pure surrender, and surrendering to Krishna through proper procedure, practicing 4 regulative principles in your life, and purifying your deha. And that is what is required for every jiva who is on this planet Earth. But unfortunately, by the influence of Maya, they are tossed in the waves of material nature, and they are completely engrossed in their material activities, and they cannot find the shelter of a Guru and Krishna. They're all in this ocean of misery, but it's the helping hand of the devotee which can pull you out of this misery. And it is your sankalpa to that particular, anukul situation. And thus, the rapport has to be there so that you can progress on the path of spiritual life. आध्यात्मिक जीवन में परस्पर एक दूसरे की स्वीकृति होती है
उस सुकृति के अंतर्गत जब आप संकल्प कर लेते हैं गुरु के आश्रय में रह के कि मैं मांसाहार, व्यभिचार, मदिरा पान ये सब नहीं करूंगा और नित्य 16 माला जप करके सदैव मैं अपने आप को तत्पर करूंगा, तो ये संकल्प ही आपको ठाकुर जी के संबंध में स्थापित कर देते हैं। और उनका क्या जो संसार में जल रहे हैं उनको हमको हेल्पिंग हैंड देना है, उनको हमको ये आध्यात्मिक जीवन का विषय समझाना होगा, और तब जाके हम परस्पर आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ेंगे। तो ये श्रीमद् भागवतम का स्तर बहुत ही अच्छा है। हिरण्यकशिपु, किंग ऑफ द डीमंस, यथा अनलो दारुसु विन्नयते यथा अनिलो देहगता पृथक् स्थिताम यथा नाभ सर्वगताम न सजते तथा पुमान सर्वगुणा आश्रय परा यथा नलो दर्शो विन्नयते यथा अनिलो देहगता पृथक् स्थिता यथा नाभ सर्वगतं न सज्जते तथा पुमान् सर्वगुणाश्रय परा यथा अनलो दारुसो विन्नयते यथा निलो देहगता पृथक् स्थिताम् यथा नाभ सर्वगतं न सजते तथा पुमान् सर्वगुणाश्रय परा यथा नलो धारसो विन्नयते यथा निलदेहगता पृथक् स्थिताम् यथा नाभ सर्वगतं न सजते तथा पुमान् सर्वगुणाश्रय परा।
Mothers, so everybody who is reciting the shloka, you must see that you prepare yourself mentally that you want to recite the Deva Vani. And you should be very bold in speaking every shabd of the shloka. And this pronunciation of shloka will also help you to modify your modulation of your words, what are coming out of your mouth. You must know this very well. Those who have studied Hindi, English, Sanskrit, how to pronounce a word. I don't know whether you got the training in the school or not, because sometimes you want to say something, but you are not able to communicate to others what you want to say. आधा शब्द अंदर रखते हो, आधा शब्द बाहर रखते हो, दूसरे को कोसते कुछ समझ नहीं आया. तो ये भी एक कला है. और especially teachers, professors, actors, sound modulators, reciters, go to the South India. They sing very, very nicely all the shlokas with the proper parameter. So we are all learners. We are learners. I am also learning. You are also learning. We are all learners. So one should not feel ashamed also when even there is a fault. But you should endeavor in such a manner that you improvise your every word what you say from your mouth, and you should improve it all the time. So that will help you to pronounce very nicely the shlokas. Or in other way also, when you are conversing with somebody, so your words are audible very nicely and you are very clear. And that happens only when your heart is clear, your intestines are also very clear, and you can also, throw words. कभी कभी ऐसा बोलता, अरे उसने तो दिल से बात किया, है कि नहीं? क्योंकि उसके हृदय में कुछ मलिनता नहीं है, संपूर्ण रूप से बड़े उत्साह से बोलता है. तो ये हमें सीखना चाहिए.
प्रयास करना चाहिए। और हफ्ते में तो एक दिन मिल जाता है यहां पर आने के लिए, तो सब लोगों को गाना चाहिए। ओके, लेट अस हियर दिस वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन। यथा, just as, anala, the fire, darusu, in wood, binna, separate, yate, is perceived, yatha, just as, anila, the air, dehagata, within the body, pratak, separate, stita, situated, yatha, just as, nabha, sky, sarvagatam, all pervading, na, not, sajjate, mix, tatha, similarly, puman, the living entity, sarvaguna ashraya, although now the shelter of the modes of material nature, para, transcendental to material contamination. Translation by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Srila Prabhupada की। और इस तरीके से प्रभुपाद जी के शब्दावलियों को आप पढ़ेंगे तो आपको आहिस्ता आहिस्ता संस्कृत वाणी में भी आनंद लगेगा। संस्कृत वाणी बड़ी सिंपल है, बड़ी सरल है, और जब भी आप पढ़ोगे तो समझ आएगा कि संस्कृत। कभी कभी लोग डर जाते हैं देववाणी को पढ़ने के लिए, मगर बहुत ही सरल है। हमारे डे टू डे लैंग्वेजेस में भी बहुत से शब्द आ जाते हैं, तो इसलिए हमें हमेशा प्रयास करना चाहिए। As fire, although situated in wood, is perceived to be different from the wood, as air, although situated within the mouth and nostrils, is perceived to be separate, and as the sky, although all-pervading, never mixes with anything, so the living entity, although now engaged within the material body, of which it is the source, is separate from it. कितना सुंदर है, isn't it? ये कौन श्लोक बोल रहा है? यमराज जी बोल रहे हैं, जो भगवान के प्रतिनिधि हैं, पोर्टफोलियो संभाल रहे हैं, और हम उसी यमराज से डरते हैं, हम उसी यमदंड से डरते हैं। मगर ये देखिए अपने वाणी से कितना सुंदर सुंदर बोल रहे हैं। और यमदंड से वही डरता है जो भगवान के नियमों को उल्लंघन करता है, isn't it? जैसे कि अभी अभी हमारे बीच में हमारे पुलिस कमिश्नर आए थे, isn't it? थाना के पुलिस कमिश्नर आए थे, तो कोई भक्त को कोई डर नहीं लग रहा है। हमको मालूम भी नहीं पड़ गया कि कमिश्नर साहब आ गए, isn't it? मगर जो चोर होता है वो हमेशा डरा रहता है, isn't it? So भक्त जो है, भगवान के भक्त हैं, वो कभी भी भगवान से डरते नहीं हैं, वो सदैव उनसे प्रेम करते रहते हैं। मगर इस श्लोक में बहुत सी बातें हैं, और मैं चाहूंगा कि आप भी इसको दोहराने का प्रयास करें, और बड़ा ही आनंद आएगा। As fire, although situated in wood, is perceived to be different from the wood, as air, although situated within the mouth and nostrils, is perceived to be separate, and as the sky, although all-pervading, never mixes with anything, so the living entity, although now encaged within the material body, of which it is the source, is separate from it.
தெரியுமா? हाँ? समझ आया आपको? Now hear what Prabhupada ji is talking. Purport by His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Srila Prabhupada ki. In the Bhagavad Gita, the Supreme Personality of Godhead has explained that the material energy and spiritual energy both emanate from Him. The material energy is described as me binna prakriti astada, the 8 separated energies of the Lord. But although the 8 gross and subtle material energies, namely earth, water, fire, air, ether, mind, intelligence, and false ego, are stated to be binna, separate from the Lord, actually they are not. As fire appears separate from wood, and as the air flowing from the nostrils and the mouth of the body appears separate from the body, so the Paramatma, the Supreme Personality of Godhead, appears separate from the living being, but is actually separate and not separate simultaneously. This is the philosophy of Achinta Beda Bhed Tattva propounded by Sri Chaitanya Mahaprabhu. According to reactions of karma, the living being appears separate from the Supreme Personality of Godhead, but actually he is very intimately related with the Lord. Consequently, even though we now seem neglected by the Lord, he is actually always alert to our activities. Under all circumstances, therefore, we should simply depend on the supremacy of the Supreme Personality of Godhead and thus revive our intimate relationship with Him. We must depend upon the authority and control of the Supreme Personality of Godhead. Om Ajnanatimirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshurunitam Yenai Tasmai Shri Guruve Namah. Namam Vishnupadaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Namine. Namaste Saraswati Deve Gauravani Prajanine Nirvishesha Shunyavadi Pasyati Deshitarine. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaur Bhaktavinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Namo Mahabhadanyaya Krishna Prema Padayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namane Gauraduse Namah. Namo Brahmana Devaya Go Brahmahitaya Cha Gadhitaya Krishnaya Govindaya Namo Namah. He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesh Gopika Kanta Radha Kanta Namusute Tapta Kanjana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vishubhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vancha Kalpatrubhyasya Kripa Sindhu Bevacha Patithanam Pavanebhyo Vaishnavibhyo Namo Namah. So, thank you for coming again. So this wonderful chapter, we are seeing
about Hiranyakashipu, and earlier that we saw Hiranyaksha was killed by the Supreme Personality of Godhead by appearing as boar reincarnation. And then we saw that the whole family was put into both lamenting situation. And we see Hiranyakashipu, the brother of Hiranyaksha, pacifying the family members with the knowledge which sometimes even the sages use. And while he was trying to pacify the sons and everybody, we see that Yamaraj comes in. And he is also talking about spiritual knowledge. You see, most of the time from our childhood, we have been hearing spiritual knowledge, but we have not been practicing it in our lives because our thoughts, our mind has been always deflected towards something which is contrary to the spiritualism. Because we have been trained in our family, okay, that you have to study, you have to go to the school, you have to go to the kindergarten, then you have to go to the school, then you have to go to the college, then you have to enter into the material, some certificate, some courses, some degrees. And while we are contemplating all these degrees and this and that, we get completely coagulated towards material life. And we're immersed from fully. Then it's very difficult for us to come out of it if you're not destined to be a wonderful devotee in your life. And the whole situation becomes more and more demonic. Because you have to take care of your parents, you have to take care of your kids, you have to take care of your job, you have to take care of so many things. And naturally, we are away from what we are supposed to do as human beings. And we still don't come to the terms, even after taking initiation, chanting 16 malas and surrendering to Guru, we don't come to the terms with this happenings which have happened from childhood to the 20 years, 24 years, 25 years, or 50 years. We don't come really to the terms that I have to really be 100% dedicated to spiritual life and be dedicated to Guru and Krishna. Isn't it? We feel still, I have to do something. As we know that Krishna is friend of ours, Namo Brahmana Devaya, Go Brahma Hitaya Cha, Jagat Hitaya, Krishnaya, Govindaya, Namo Namah. He's my friend, but I have no affinity to him. He's friend of cows. We are nobody is wanting to serve the cows. That's why the Brahmanical culture has been going down, always, because we see the Shuklas, Mishras, and Pandays taking a job of a darban at the security and forgetting they're actually who they are. This forgetfulness of a jiva entangles him more and more in the material world. And as per the guna and karma, he's completely slipping away from the commitments which he has made in his life
that I will serve you in the womb of a mother. Then different jobs, different relationships, girlfriends, boyfriends, mother, chacha, taya, nayana, all these things come and we call it our own family. And we try to forget that we are actually belonging to the family of the Supreme Personality of Godhead. And in due course of a time, we completely forget our relationship with Him. And we keep on suffering and suffering and suffering. Even if our material bank balance is filled with money, we may have our own houses, we may have our own families. We try to, relate to it more rather than our real relationship with Krishna, because we are part and parcel of the Supreme Personality of Godhead. How do we forget that? Because it's our own fault, it's our own forgetfulness which makes us to go away from the lotus feet of Krishna. So here we see in the verse 40 what Yamaraj is talking to these people. He says, sometimes one loses his money on a public street where everyone can see it, and yet his money is protected by destiny, not seen by others. My dear friends, sometimes you see that the Bombay comes number one. What? We see that the person who loses the money, he gets back money in Bombay. They have highlighted that Bombay is a sincere city where if you lose your money somewhere on the street, somebody is going to bring you back. Because one auto rickshaw guy, he was carrying one foreigner. So he lost his money in the auto rickshaw, his passport, money, dollars and everything. And he thought that everything is gone, finished. But after some time, he gets a phone call. Oh, auto rickshaw comes, auto rickshaw driver says that, your wallet has been found in such and such beat of the police station, and he finds it as it is. So here it is said that sometimes if you are destined to lose the money, you lose. And if you are destined to get it back, who is protecting it? Who is protecting it? Like that, on the other hand, if the Lord does not give protection, even money maintained very securely at home is lost. Isn't it? We have seen many times in so many banks, Punjab and Sindh Bank, all the people have been put in the misery. They thought that the money is in the bank. But even the bank was looted by the so-called people. Under this situation, what do we do? Isn't it? If the Supreme Lord gives one protection, even though one has no protector, and in the jungle, one remains alive, whereas a person well protected at home by relatives and others sometimes dies. Isn't it? So on these things, if we contemplate, then we'll see that actually Krishna is the protector. We see from the life of Satyuga, from the life of Prahlad Maharaj, how he was protected from all the odds. Now it may seem to us fiction, mythology, but it's history. It's the Vedic history. Krishna protected Prahlad Maharaj in all the circumstances. Have you got the same faith with Krishna at this moment that he is going to protect you? It's komal. It's very soft. Because you still feel that if you don't go to the job in the morning, you may lose your job. If your mother doesn't cook for you, you may remain hungry. If you don't come out of your house
you may not reach the destination. So under these circumstances, the Komal situations, you try to persuade yourself that you are the Karta, you are the Bhokta, and you are the doer. Actually, you're not. Everything is controlled by Krishna. Demon may not understand it, but the devotee completely understands that he is completely protected by Krishna. Demon cannot understand because his senses are completely blunt. His senses are completely saturated in the material world. भौतिक अवस्था में उसका जीवन ग्रस्त हो चुका है. इस ग्रस्त स्थिति में वो आध्यात्मिक जीवन की उत्प्राकाष्ठा में आनंद नहीं ले सकता. ये आपके भक्ति के ऊपर है कि आप कितने ठाकुर जी के ऊपर निर्भर है. कृष्ण से सर्वधर्मां परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वा सर्वपापी विमोक्षयामि महासुच. This shloka was heard by Krishna, was spoken by Krishna and heard by Arjuna 5,000 years back. And the same Arjuna was faltering in his responsibilities before the 10 chapters of Bhagavad Gita. But when he heard who Krishna is, he was convinced that Supreme Personality of Godhead, Krishna, is not only my friend, but he is the Supreme Person. And once he heard that, he had an unalloyed devotional service towards him all the time. So while we are practicing Krishna consciousness, we have to understand, we have to read Bhagavad Gita as it is. When you will come to know where Krishna is explaining the nature, where he's saying that this nature is working under my direction. It is non-different from me. The person who has not read Bhagavad Gita, how he can understand and relish this shloka? If he is not convinced what he has read in the Bhagavad Gita, also he may not understand the supremacy of the Supreme Personality of Godhead. A Muslim, a Sikh, a Christian, a Bodh, if he has not read the Bhagavad Gita, how he will get convinced about the teachings of the Supreme Personality of Godhead? How he will come to know who is that Supreme Personality of Godhead? How he will come to know that who that Allah is? How he will come to know that who Buddha is? How he will come to know who Guru Nanak is? If he is not convinced with the teaching of the Bhagavad Gita, how can he understand? Sometimes it's beyond the purview of a saintly people to understand who Krishna is. And that's very much evident from the teachings of the Bhagavatam, that even the Brahma cannot understand, even Indra cannot understand, even the demigods cannot understand. Who are we? So that is why in our mind many times Kintu Parantu arises because of our impurities, because of our attachment to the material world, because of our affinity to lord over to material things. That's why we are suffering in the material world, even if we have the best of the facilities. Because we have not surrendered 100%. We have not surrendered 100%. If you are not surrendered 100%, why do you want 100% service from the Supreme Personality of Godhead? So you will be always partially influenced by the Lord. You may not even understand the same Supreme Lord, because you have not understood him completely. You have not given him 100% yours. Even if the material activity, if you are not putting your 100%, how can you get the 100% results? Even a small child who's studying in a college or a school,
If he is not studying properly in the exams or in the whole year, he will not get the 100% marks. But sometimes we see people getting 99.9% marks and still they feel very unhappy. They said, मैंने 1% मेरा कहां पर गड़बड़ हो गया? Isn't it? The same thing we have to practice in ourselves. Rather than putting aspersions on the Supreme Personality of Godhead, we have to understand how much we have given in the service of Krishna. Ye yatha mam prapadante tam tathaiva bhajamyam. Krishna is saying, as you reciprocate with me, accordingly I will reciprocate with you. So it's very difficult here. We see here that, Prabhupada ji is giving completely very beautiful example. He is giving the example of Prahlad Maharaj. Child is certainly dependent on his father and mother, but in spite of their presence, the child is harassed in many ways. कई बार हमने देखा है माता पिताओं को हॉस्पिटल के चक्कर घुमवाते हुए. क्या हुआ? नाक से कुछ पाइप आ रही है, कान से कुछ हो रहा है, जबकि बच्चा माता पिता के आश्रित है, मगर फिर भी वो माता पिता भटक रहे हैं, एक हॉस्पिटल, एक डॉक्टर, एक उधर, एक इधर. माता पिता का आश्रय होने के बाद भी वो आश्रय नहीं ढूंढ पाते हैं. And what is happening? Why it is happening? Sometimes the immature parents will say, देखिए भगवान ने मेरे साथ क्या किया, देखो देखो मेरे बच्चे के साथ क्या किया. ये बच्चे ने कोई पाप किया है क्या? बताइए ना स्वामी जी, बताइए ना, ये बच्चा कभी पाप कर सकता है क्या? आपका एक्सपीरियंस है कि नहीं? बताओ ना भाई. Many times people curse even. ये भगवान ने मेरे साथ क्या किया, ये भगवान ने मेरे साथ क्या किया. हाय 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 हाय. भगवान ये सब चीजों में हस्तक्षेप नहीं करता. ये तुम्हारे जीवन के कर्मों का हस्तक्षेप है जो तुमको ऐसे जीवन प्रदान कर रहा है. उसमें कोई शक नहीं है. प्रभुपाद जी बता रहे हैं, everything is dependent on the free will of the Supreme Personality of God, and our only duty is to surrender Him. हमारा कर्तव्य है कि हम संपूर्ण रूप से भगवान के आश्रय लें, बोनाफाइड गुरु का आश्रय ले, तब जाके हम आध्यात्मिक जीवन की उत्तम पराकाष्ठा को समझ सकते हैं और ये संसार के संताप जो हैं छोटे लगने लगेंगे, क्योंकि ये स्वयं हमारी करनी है. इस करनी में भी जब हम आध्यात्मिक जीवन की भरनी रखेंगे तब जाके संताप भी खत्म हो जाएंगे आपके. You will not be able to feel the pain which you may be undergoing in this material world, because you have taken the shelter of the Supreme Personality of Godhead. You will be always na sochite kasyati. You will be always thoughtfully engaged in the service of Krishna, not cursing anybody. You'll be always in the devotional service, and this devotional service, this relationship with Krishna in 5 ways will always keep you floating in this material world, because you have developed a relationship with Krishna which is eternal. You are pursuing to establish the relationship with Krishna, while even persuasion also, Krishna is going to protect you. भले ही आप उत्तम भक्त नहीं बने हैं, मगर आध्यात्मिक जीवन में प्रयास कर रहे हैं, उस प्रयास के स्थिति में भी भगवान आपकी रक्षा करेंगे और आपकी संतापों को कम कर देंगे. इसमें अटल विश्वास रखेगा. मगर हमारे सभी प्रयास, हमारे सभी आध्यात्मिक जीवन के प्रयास निष्कपट और निर्वैर
और शुद्ध प्रयास होना चाहिए। अगर शुद्ध प्रयास नहीं है, निर्वैर नहीं है, ईगो, ईर्ष्या नहीं है, भगवान आपकी सदैव रक्षा करेंगे। और यमराज जी क्या कह रहे हैं? हर व्यक्ति का रिसीव डिफरेंट, हर जीवात्मा को नया अलग अलग शरीर मिलता है। यहां पर जितने भी बैठे हुए हर चेहरा अलग है, हर मुखौटा अलग है, हर शरीर अलग है। कोई मोटा है तो कोई पतला है, कोई गोरा है तो कोई काला है, किसकी नाक छोटी है तो किसकी नाक मोटी है। ये कौन कर रहा है? यहां पर बता रहे हैं, every conditioned soul receives a different type of a body according to his work. इच्छा के अनुसार, कार्य के अनुसार उसको शरीर मिलता है। And when engaged in the is finished, the body is finished. जैसे कार्य करता है उसके अंतर्गत जो उनका शरीर खत्म हो जाता है, वैसा शरीर प्राप्त हो जाता है। भाई, कभी कभी लोगों को अपनी दाढ़ी पर बड़ा गुमान होता है। हो सकता है पिछले जन्म में बंदर रहा हो। है? किसी को बाल निकालना अच्छा नहीं लगता। है? चैतन्य महाप्रभु ने बताया कि भाई ये समर्पण का एक उत्तम प्रतीक है। आजकल के कलयुग में सबको बाल अच्छा लगता है, isn't it? मगर प्रभुपाद जी ने, चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान हमको सिखाने के लिए दाढ़ी बाल वगैरह सब निकाल दी। भगवान को क्या करने की जरूरत है? उन्होंने तो जब द्वापर में आए थे तो उनके बाल तो गुंगराले थे, कितने ही सुंदर थे। मगर जब कलयुग में चैतन्य महाप्रभु बन के आ गए तो उन्होंने पूरा पहले मस्तक मुंडन किया, है कि नहीं? भगवान जब भक्त बन के आ गए तो भक्तों को सिखा रहे हैं कि कैसे भक्ति करना चाहिए। मगर बड़ा ही कठिन है ना। हाँ, बताइए ना प्रभु, बहुत कठिन है ना। अगर मैं ये प्रभु जी को बोलूं कि कल जरा दाढ़ी काट के आ जाना, तो कल से दिखेगा ही नहीं। हाँ? और अगर किसी प्रभु जी को बोलूंगा जरा मूंछ काट के आ जाना, बोला नहीं, पिताजी ने बोला नहीं, मूंछ काटते नहीं है हमारे में। वो जब कोई घर में मरता है तभी मरते, मूंछ काटते। हाँ? तो सभी प्रकार की सभी वर्गों को अलग अलग सोचने का विचार है। मगर जहां पर भगवान इन निर्देशन देते हैं उस पर ध्यान नहीं जाता। We are more attached to our family. We are more attached to our parents. We are more attached to our own communities. We are so attached to our own little frills. We are not attached to the instructions of the Supreme Personality of Godhead, Sri Krishna. That's why we are all suffering in this material world. But if we adhere to the instructions of the Supreme Personality of Godhead, we will be always very much blissful. That's what is mentioned here, you see. Here it is very clearly said that God is not responsible for living entities' acceptance different types of body. हाँ? भगवान रिस्पॉन्सिबल नहीं है हमारे जो नए नए शरीर मिलते हैं उसके लिए, उनका कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। ये हमारी कर्मों की गति है जो हमको विभिन्न प्रकार के 84 लाख योनियों में हमको धकेल देता है। मगर अगर इन सभी गुणों से गुणातीत होना है तो हमें भगवत भक्ति करनी होगी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कलयुग का सबसे आसान सरल तरीका इन
गुणों से ऊपर उठने का, और गुणों से ऊपर उठने के बाद सरल तरीके से भक्ति करने का हम ये दिव्य ज्ञान समझ सकते हैं। और 42 श्लोक में गृहस्थों के लिए भी बताया गया है। कभी कभी हम 2 बेडरूम 4 बेडरूम घर को अपना घर समझते हैं। यहां पर बता रहे हैं, जस्ट एज अ हाउस होल्डर ऑल्दो डिफरेंट फ्रॉम द आइडेंटिटी ऑफ हिज हाउस, बट स्टिल ही इज आइडेंटिफाइंग, ये मेरा घर है। प्रभु जी आप किधर रहते हैं? 404, सोसाइटी का नंबर। वो फ्लैट अलग है, मगर फिर भी बोल रहे हैं कि मेरा, मैं वो। जैसे कल हमारे रत्नमुखी प्रभु जी प्रवचन दे रहे थे। कभी कभी हम लोग बड़ी मर्सिडीज गाड़ी में जाते हैं, तो हमें, जब हम मर्सिडीज गाड़ी में जाते हैं तो ऐसा लगता है कि उसका प्रभाव हमारे ही खोपड़ी में सब आ गया, ये हमारे जीवन का प्रतिष्ठा बन जाता है। मगर वही मर्सिडीज गाड़ी में जा रहे हो तो एक्सीडेंट हो जाए आपको, तो आपको पता चल जाता कि आपका स्वभाव क्या है। एक्सीडेंट हो जाता है, बाहर आ जाता है तो चिल्लाने लगता है, कार से बाहर आ जाता है, बीच रास्ता रोक लेते हैं और दूसरों के साथ झगड़ा करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने समझा ये कार मैं हूं एक्चुअली, मगर एक्चुअली हम कार नहीं हैं, हम फ्लैट नहीं हैं, हम ये शरीर नहीं हैं, हम जीवात्मा हैं। इसकी अनुभूति उतनी आसानी से नहीं होती है, उसमें हमें देवीवाणी को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, उसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, उसको अपने जीवन में उतारना पड़ेगा। कई सालों तक, कई जीवनों तक जब आध्यात्मिक जीवन के इस ज्ञान को आप अपने जीवन में ध्यानस्थ करते हुए प्रैक्टिस करेंगे, तब जाके आपको पता चलेगा कि मैं ये शरीर भी नहीं हूं, मैं एक जीवात्मा हूं। ये ऊपरी जो स्वभाव आया है, ये मेरे गुणों के हिसाब से आया है। मुझे इन रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण को पार करना है, तब जाके मैं सतोगुण में रहते हुए कई जीवनों तक, तब जाके मैं आध्यात्मिक जगत में प्रवेश कर सकता हूं। और वो आध्यात्मिक जगत भगवान से भिन्न नहीं है, वो स्वयं भगवान का अंश है। उसके लिए हमें बहुत प्रैक्टिस की बहुत जरूरत पड़ती है। इसलिए प्रभुपाद जी बता रहे हैं, we transmigrate from one body to another in different bodies that are products of illusion, but the spirit souls, we always exist separately from the material condition life. So for example, here it is said that a house or a car is always different from the owner. Likewise, soul is different from the body, and that body is also coming from Krishna to us. We must not think that it is separate from Krishna. So here, if we have to understand, we have to go back to the Bhagavad Gita, chapter number, chapter number 14. We must understand this. जो भागवत गीता का 14वां जो चैप्टर है, भगवान हमको बड़े सुंदर तरीके से समझाते हैं। क्या समझाते हैं? Again I shall declare to you the supreme wisdom, the best of all knowledges, knowing which all the sages have attained the supreme perfection. पिछले समय काल में
ये दिव्य ज्ञान को जिसने भी अपने जीवन में समझ लिया है वो मेरे परम धाम में पहुंचे हैं। ये दिव्य ज्ञान जानना बहुत जरूरी है, उसके बगैर हमारा कोई अभिप्राय नहीं होगा, स्वयं भगवान बता रहे। और इदम ज्ञानम उपश्रिता मम साधर्मयम आगता सर्गे अपि नोपजायन्ते प्रलय न व्याथन्ति च। इस ज्ञान में, इस दिव्य ज्ञान में जो फिक्स रहता है तभी जाके वो मेरे दिव्य धाम में पहुंच सकता है। You have to be always immersed, soaked in this transcendental knowledge. Then only this knowledge will push you into the spiritual world. Otherwise, it is not possible. Then Krishna is saying that you will not be born again at the time of creation. आपको मालूम है, क्रिएशन होता है, एनाइलेशन होता है, फिर विलीन होता है, फिर आता है, आप जानते हैं ये सब चीज। मगर उस टाइम पे आप वापस नहीं आएंगे, आप भगवान के दिव्य धाम में स्थित रहेंगे अगर आप इस दिव्य ज्ञान से संपूर्ण रूप से पारंगत हैं। Who is saying this? Krishna is saying, मम योनिर महद ब्रह्म तस्मिन् गर्भम ददामि अहम संभवा सर्वभूतानां तथो भवति भारत। ये सब भौतिक जो प्रकृति है ये ब्राह्मण कहलाती है, ओके, एंड इसका भी उद्गम मुझसे ही है। ये सब जान लीजिए, ये सब चीज का उद्गम मैं ही हूं, और सभी जीव जो आते हैं उनका बीज भी मैं ही रोपण करता हूं। This is called transcendental knowledge. When you are completely equiposed in this transcendental knowledge, you will not suffer in this material world. You will be always, even if you suffer, you will be tolerant. Even if you suffer, you will not curse God. Even if you suffer, you will be having cushions to tolerate the suffering. And it should be understood that all species of life, O son of Kunti, are made possible by birth in this material nature, and that I am the seed-giving father. मैं सभी योनियों में सभी जीवों का बीज प्रदान करने वाला पिता हूं, और जो बीज प्रदान करने वाला पिता के सभी निर्देशनों को फॉलो करते हैं वो कभी भी भयभीत नहीं होते। और इस सुंदर चैप्टर में बहुत बड़े से अच्छे श्लोक हैं। इच्छाओं के अंतर्गत जो भी हमारे डिजायर्स पैदा होते हैं, ये डिजायर्स हमको भौतिक संसार में धकेल देते हैं। भगवान मेरे को ये दे दो, वो दे दो, गाड़ी दे दो, बंगला दे दो, घर दे दो। अब ये डिजायर्स लेते हुए आप वापस इस संसार में ही आएंगे भाई। ये मत सोचिए कि भगवान तुमको भगवत धाम लेके जाएंगे, पुनः वापस आना पड़ेगा। This is born out of the passion. This is born out of ignorance. अज्ञानता के अंतर्गत ये सब उत्पन्न होता है, और ये इच्छाओं की पूर्ति के लिए आप संसार में कार्यग्रस्त रहते हैं, और आपके कार्य में सदैव तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण की स्थिति में रहते हैं। मगर ये सतोगुण ही है जो आपको इस संसार से उभार सकता है।
Then it is said in this, जितने भी है रजस तमस वगैरह जो भी हैं वो आपको विभिन्न प्रकार की योनियों में डाल देते हैं. कोई कुत्ता है, कोई बिल्ली है, कोई शेर है, वो सब. ओके. देन जब भी ऐसे गुणों में वृद्धि होती है, तमोगुण रजोगुण, तो वैसे प्रकार के शरीर हमको मिलते हैं. इसलिए भक्ति सबसे सरल है. भक्ति से आप गुणातीत हो जाते हैं, क्योंकि इस भक्ति से आप जो है सभी जितनी भी अज्ञानता है, जितने भी अपवित्रता है, शुद्धिकरण हो जाता है. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. क्या होता है ये हरे कृष्ण महामंत्र से? वो आपके खोपड़ी में भी नहीं जा सकता कि क्या होता है. जिस तरीके से बच्चा ये नहीं जान सकता है कि जब मां गंदे कपड़े को मशीन में डाल देती है, बच्चा बोला ये मामा क्या कर रही है, ये क्या डिटर्जेंट डाल रही है, मशीन को प्रेस कर रही है, ऐसे गुड़गुड़ गुड़गुड़ गुड़ हो रहा है, बच्चे को समझ नहीं आ रहा है. इसी तरीके से जो अज्ञानता पर होता है उसको ये हरे कृष्ण महामंत्र की सफलता का राज मालूम नहीं है. जब हरे कृष्ण महामंत्र जपेगा तब जाके उसका इफेक्ट खुद देख सकता है. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम और फिर इसी चैप्टर में आगे बताते हैं जो सतोगुण में मरता है वो संतों के प्लैनेट में चला जाता है, सेज के प्लैनेट में चला जाता है. राजसी में वो वापस संसार में आ जाता है. जब आप बताएंगे कि गुडनेस में क्या होता है. कभी कभी हम लोग सोचते हैं मुसलमान लोग भी चले जाएंगे भगवत धाम, गोलोक धाम. अरे स्वामी जी क्या होगा इनका, ये लोग भी तो बहुत अच्छा भक्ति करते हैं, उनका भी तो भगवान होगा. ये क्रिश्चियन लोग भी तो उनका बहुत अच्छा है, दारू पीते, सब कुछ करते, 7वें दिन जाते हैं, वो भी जाएंगे भगवान के धाम, गोलोक धाम. नहीं, मांसाहारी व्यभिचारी मदिरा पान करने वाला उधर नहीं जा सकता. यहां पर क्लियरली बता रहे हैं जब सतोगुण में रहेंगे, जब सत ज्ञान में रहेंगे, तब जाके आप आध्यात्मिक जीवन में उसमें प्रवेश कर सकते हैं. नहीं तो इट इज कॉल्ड डेवलप फूलिशनेस एंड मैडनेस एंड इल्यूजन. बाकी सब जो गुण है दैट विल क्रिएट ऑल दैट स्टफ. ओके. Those who are in the mode of goodness gradually go to the different planets. Isn't it? देख रहे हैं हम लोग, देखते हैं देवता हैं, उनमें भी देवताओं में भी कौन बड़ा देवता है. Isn't it? और जो अबॉमिनेबल कार्यक्रम करते हैं वो वास्तविकता में नरक में जाते हैं. जो मांसाहार करते हैं, गाय को काटते हैं, दारू पीते हैं, वो हेलिश प्लेनेट में चले जाते हैं. भले ही उनको बोला जाता है कि भाई टेररिस्ट बन के तुमको हूरे मिल जाएंगे, मगर वहां पर कोई हूरे पूरे नहीं मिलने वाली उनको. याद रखो वो पूरे नरक में जाएंगे, हेलिश प्लैनेट्स. एंड then this is very important shloka of this chapter. Mam chayobe vyabicharena bhakti yogena sevate sagunan samititedha brahma bhuyayate kalpate. This is the crux of this chapter. क्या है बोलते हैं? One who engages in full devotional service
जो हम सब इकट्ठे करते हैं, जो भगवत भक्ति में पूर्ण रूप तरीके से संलग्न है, वो क्या है? अनफेलिंग इन ऑल सर्कमस्टांसेस, at once transcends the modes of the material nature and thus comes to the level of Brahman. इतनी शक्ति है ये भक्ति के सभी कार्यों को करने में। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम दास्यम साक्यम आत्मनिवेदनम, ये सभी नवदा भक्ति के जितने भी स्टेप्स हैं, अगर हम सतर्कता से करेंगे, so we'll go back home, back to God. It's not myself saying, it is Krishna is saying. Sagunan samititte tha. So you will transcend the modes of material nature through the process of bhakti, and Lord Chaitanya Mahaprabhu has made it very simple for us in the age of Kali Yuga. Chant Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. और जप करो, प्रसाद पाओ, और सदैव मुस्कुराते रहो। क्या कठिनाई है? 26वें श्लोक में भगवान बोलते हैं हमेशा भक्ति कीजिए, एंड एट द एंड ऑफ दिस चैप्टर this is, once you are situated in devotional service, your constitutional position of ultimate happiness. You will be always in real happiness when we'll be executing devotional service. And this bliss you can see in flesh. When Srila Prabhupada was executing devotional service, this bliss you can see in flesh with the acharyas who are initiating you. Because they are always utilizing 24/7 in the service of Krishna, even if they have physical ailments, but they are always alert to give you Krishna consciousness all the time. That shows that what a real transcendentalist can do for us. He may be seeming from externally that he is in pain of the body, but his consciousness is completely with Krishna. He is always giving Krishna consciousness to the people. We could see Srila Prabhupada traveling all over the world at the age of 85 and giving Krishna consciousness to everybody and engaging everybody in the service of Krishna. This determination of a devotee is really actually the compassion for all the people who are suffering in this material world without this real knowledge. Why they are putting themselves into the pain? So that they can give them the real, this transcendental knowledge. ये दिव्य ज्ञान का प्रसार करने में उन्होंने अपने जीवन को तत्पर कर लिया है। हमें भी उन्हें उनके पद चिन्हों पर चल के ये दिव्य ज्ञान ऐसे मूढ़ लोगों को बांटना है जिनके जीवन में ये दिव्य ज्ञान की एक भी किरण उनके जीवन में नहीं घुसी हुई है। ये हमारा प्रयास सबका रहना चाहिए, और सदैव हम अगर भगवत भक्ति के इन प्रसंगों में जुड़े रहेंगे, जोड़ते रहेंगे, तो भगवान, इट इज जस्ट लाइक एन nowadays people may have batteries, करेक्ट? आपने देखा ना, पहले जमाने में साइकिल में डायनेमो लगता था, यस नो? उसमें कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं होता था, वो डायनेमो खुद ब खुद टायर के साथ चलता था, so it used to give more and more electricity, isn't it? So like that, this process of Krishna consciousness is like that. The more you will give you to the people, and the more you will get it. The more you pour, the more you filled become in your life. So this should be the endeavor of all the devotees. चाहे वो माताजियाँ हैं, चाहे वो बच्चियाँ हैं, चाहे बिटिया हो, चाहे प्रभु हो, चाहे वो माताजी हो, everybody has to execute this devotional service. जारे देखो ताहे कहो कृष्ण उपदेश. That is what is our business all the time, and we can make ourselves happy and rest of the people very happy. And the distance between the lip and saucer is always there, but the moment the lip is on the saucer, you can drink the nectar,
Like that, the jiva who is not tasted yet Krishna consciousness, once he comes and adheres to the instructions of a fellow devotee, he can also become happy. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. We can see that Dharmaraj, Yamaraj, whose portfolio is to punish all of us, but he is one of the Mahajans. He is a representative of the Supreme Personality of Godhead, and what is coming from his mouth has to be adhered very strictly and very, very nicely. And those who follow the instructions of the Supreme Personality of Godhead through his representatives, they will be always very happy. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram. So this instruction, Yamaraj himself is giving. So we must adhere to these instructions. Hare Krishna. Anybody has got any questions, any comments, any additions to this whole thing? Even if I have made mistakes, you can correct me also. Yes, Prabhuji, please. Yes. केवल भक्तों में नहीं है क्योंकि भक्त जो है सदैव हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम। चाहे आप प्रहलाद को देखो, चाहे आप ध्रुव को देखो, चाहे आप नारद को देखो, चाहे प्रभुपाद जी को देखो, वो सदैव प्रसन्नचित रहते हैं, क्योंकि देवी देवता भी पोस्ट लेके बैठे हुए हैं, और कभी छिन जाता है पोस्ट तो हम लोग दुखी हो जाते हैं। कभी टेंपल कमांडर को बोल दीजिए भाई आज तुम दूसरा काम करो, तो वो बोल रहे नहीं, क्यों कैसे करेगा? We are so attached, like, and in the material world also we are so attached. Our vairagya, our bhakti is not completely immersed. We are not completely immersed. You see, sometimes we also complain. I complain sometimes, many times, because I am not a real 100% devotee. So, but the process of devotional service is so potent that can make you actually liberated from the modes of the material nature, that can make you liberated and rise you different level. And that's what we can see from the life of all these Mahajans. Who is Mahajans? If we analyze each and every Mahajan, their life is so blissful. Isn't it? Look at Bhishma Pitama. Look at his life. Look at Yudhishthira Maharaj. Their life is very glorious. Look at Lord Shiva. Very glorious all the time. But wherever there are these posts, little trouble is there. Their little deficiency is there, that it is not fully absorbed in devotional service. And Prabhupada ji also says in some place, when you relate to Krishna, in the previous verses, if you relate to the Krishna in 5 rasas, this will give you a real access to Krishna. And you have to emerge out of these situations and come to that level, even if that is in pratikul bhav. But Krishna will give you 100% marks in that.
प्रतिकूल भाव में भी अगर कृष्ण नाम लेते हैं, प्रतिकूल भाव में भी अगर आप कृष्ण चिंतन करेंगे, फिर भी कृष्ण आपको लिबरेट कर देते। पूतना को देखिए और कंस को देखिए, शिशुपाल को देखिए। सो प्रतिकूल भाव में भी अनुकूलता आ गई, क्योंकि कृष्ण संबंधित प्रतिकूलता है। मेरे साथ दुश्मनी करोगे तो क्या होगा तुम्हारा? कुछ नहीं होगा। मगर कृष्ण से दुश्मनी करो भाई, कृष्ण कृष्ण हमेशा बोलो, हर पल कृष्ण कृष्ण बोलो, कृष्ण मेरा दुश्मन, कृष्ण मेरा दुश्मन, है ना? तो प्रभुपाद चैतन्य महाप्रभु बताते हैं कि अरे ये कौन बताया उनको चैतन्य महाप्रभु का, इन लोगों मुसलमानों का कैसा उद्धार होगा? कौन बोला था? हरिदास ठाकुर, जो नामाचार्य थे। ये सब इन मुसलमानों का कैसा उद्धार होगा? वो बोले बोले कि भाई वो तो हमेशा हाराम 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 करते हैं, राम को भी हराम बोलते हैं। तो बोले राम में, हराम में भी राम छुपा हुआ है। भगवान बड़े कृपालु है, वो उसमें भी उनका उद्धार करा देते। Isn't it? ये भगवान का, भगवान इज नॉट लाइक अस, यू नो, लाइक हु विल बी वेरी सेक्टेरियन, ही विल से उसको ज्यादा पनीर दिया उसका दोस्ती हो गया, उसको कम दे दिया तो दुश्मनी होगा। ये नहीं, सो हाई, दैट इज ऑल, इट्स डिफरेंट प्लेटफॉर्म ऑल टुगेदर। So Lord is, because सभी जीव उनके अंश हैं। ध्यान से सुनिए आप, इसमें क्या पढ़ा आप लोगों ने? सभी उनसे ही आए हुए हैं। बट भक्त जो है बड़ा ही प्रिय भगवान को होता है। अनुकूल तरीके से भक्त बनना और प्रतिकूल तरीके से भक्त बनना, इसमें भी, दोनों में भी डिफरेंस है। नारद जी को देखिए, उनका कोई दुश्मन ही नहीं है, दानव भी उनके दोस्त और देवता भी उनके दोस्त। ये है पोजीशन ऑफ डिवोटी। सो वी हैव टू कम टू दैट लेवल, वी बिकम वंडरफुल डिवोटीज। यस, यस, हाँ, यस। कृष्ण भगवान बताते ना, वो लोअर प्लैनेट्स में चले जाते, लोअर प्लैनेट्स में चले जाते, पशु योनि में आ जाते हैं। लॉस ऑफ कर्मा में आपने देखा नहीं? आप गाय को काटोगे तो एक दिन गाय आपको काटेगी, वो थोड़ी छोड़ने वाली है। यस, कई जन्मों तक, सारी जन्म ने, कई जन्मों तक जितने उस गाय में। यस, सो हम लोग अपने नजरिए से देखते हैं भगवान की क्रिएशन को, तो हमको तो छोटा ही दिखेगा ना। जैसे कि प्रीवियस वर्स में बताया है, वास्टनेस ऑफ द स्काई may seem to us limited, but it is never attaching, it is never coming together any place. होराइजन जिसको बोलते हैं ना, होराइजन में जाएंगे तो दिखेगा कि वहां पर लगता है कि जमीन और आसमान मिल रहा है, मगर कहीं पे भी जमीन और आसमान मिल नहीं रहा है। ये भ्रम हमको हो रहा है। सो इसलिए इन गुणों को लांघना ही बहुत। प्रभुपाद जी अपने आध्यात्मिक जीवन के उच्चतम शरीर की जर्नी में, जब वो वृंदावन में शरीर छोड़ रहे थे, तो वो यही हमको क्या इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं? आप लोगों ने देखा ना फाइनल पास टाइम्स ऑफ श्रील प्रभुपाद,
So what is he talking about? He's talking about transcending these modes. And if we are not perfect in our devotional service, it will be very difficult to transcend these modes. So my humble request is, execute your devotional service very nicely so that we can go back home, back to God in this lifetime. Okay? Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare. So we recently had a wonderful temple opening at Patna. Okay? So another wonderful temple opening, in Bihar. You see, I told them also sometimes we were influenced by Lalu Ramji. There, Bihar means Lalu Ram. But now the real Vedic culture will be revived over there. Patliputra. Patliputra means place of wonderful pastimes of Krishna. Gajagraha. You see, Harihar Kshetra is there. Okay, and so many wonderful places in Bihar. Lord Chaitanya Mahaprabhu, he went to Jharkhand, जहां पर उन्होंने पशुओं को नाम संकीर्तन में नचाया. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम. और बहुत से ऐसे ऐसे पास टाइम्स हैं. भक्तों के गुणानुवार्धन करने से क्या होगा? लोगों का ज्ञान वृद्धि होगा. जब भागवत कथा चलेगी वहां पर उस पाटलिपुत्र का गुणगान होगा तो वापस उसकी कीर्ति और यशस्वी जो लैंड था जहां पर स्वयं चाणक्य का बर्थ हुआ था, इसी ऐसे ऐसे संतों के जीवन के ऊपर प्रकाश डालेंगे उस मंदिर में. क्योंकि हम लोग तो स्पेकुलेट तो करते नहीं कुछ, हम लोग शास्त्र बोलते हैं और शास्त्र में गुणानुवर्धन होता है शास्त्रों का और भक्तों का. और वो भी वहां पर गया जहां पर चैतन्य महाप्रभु स्वयं गए, वहां पर विष्णुपाद है. वहां पर इसी गया में अल्टीमेटली बोलते हैं ना, जीव का उद्धार कहां हो जाता है? गया में जब श्राद्ध हो जाता है. चैतन्य महाप्रभु भी वहां पर गए. तो ऐसे ऐसे क्षेत्रों में चले जाएंगे लोग तो आनंद ही आनंद आएगा. हमको आनंद आया, मगर अब हम लोगों को भी तैयार करना पड़ेगा अपने आप को. क्योंकि सब लोग बोलते हैं खारगर मंदिर का उद्घाटन होगा. भाई रेडी है कि नहीं आप लोग? अरे बोलते रहते हैं, कुछ तो करते नहीं है. एक्शन में आना पड़ेगा ना. हम लोग नहीं, ऐसा नहीं है. करने वाला ठाकुर जी है, करने वाला ईश्वर है. हम लोग सिर्फ निमित्त हैं और हम सब निमित्त होने के साथ साथ में हम एक साथ होना चाहिए ताकि हम जो कार्य है बड़े स्ट्रांग तरीके से कर सकते हैं. सब लोगों की निगाहें अब इधर पे हैं, यहाँ के भक्तों के ऊपर है. लोगों ने सुना कि यहाँ के भक्त लोग वैष्णव आंग्री प्रभु बड़े अच्छे भक्त हैं, सीता मोहन प्रभु बड़े अच्छे भक्त हैं और आप सब लोग बड़े अच्छे भक्त हैं. तो वो बोल रहे हैं जब खारगर मंदिर होगा तो बहुत ही अच्छा होगा. तो आप लोग जल्दी से हेल्प कीजिए. तो यहाँ पर अगर वहां पर 3 दिन का फेस्टिवल था, यहाँ पर एटलीस्ट 7 दिन का फेस्टिवल होना चाहिए. तो इसके लिए सब मिलके हमारे जितने भी लीडर्स हैं, कांग्रेगेशनल लीडर्स हैं, उनसे मुझे निवेदन करना है, हाथ जोड़ के अभी से सतर्क हो जाइए. अपने लोगों को प्रैक्टिस करवाइए. सब कार्यों में कुशलता में सब बढ़िया से होना चाहिए. चाहे वो प्रसाद वितरण हो, चाहे वो लोगों को संभालने की स्थिति हो, सब लोगों को बड़े मेटिकुलसली वी हैव टू सी दैट वी accomplish this opening of the temple. And for that, everybody has to become stronger. Matajis, Prabhus, everybody has to become very, very nice. So please work on it. And that's what we told yesterday also in the festival committee. And today also all of you are going to meet the congregational heads. Please talk about it
and meticulously we must work very nicely. This is what I have to request all of you. Shri Shri Radha Madan Mohan Bhagavan ki, Nitai Gaur Sundar Bhagavan ki, Srila Prabhupada ki, Gaur Premanande.